In linear motion, linear momentum is conserved. Similarly, with analogy, we can prove in rotational motion conservation of angular momentum. So today we will continue its proof and we will discuss point number 1.10 on page number 18. बुक का टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 18 निकालो, उसमें पॉइंट नंबर 1.10 ये हम लोग आज पढ़ेंगे. Yesterday we derived formula for capital L, symbol of angular momentum, and we proved L is equal to I omega, where omega is angular velocity and I moment of inertia of a rotating body about given axis of rotation. ये हम लोगों ने कल देखा था. अभी what we have to prove, its conservation means torque produces rotational motion. So once body starts rotating, if no unbalanced torque acts on the body, L till the end of the motion remain constant. 1 minute, there is a problem for connectivity. Let us wait. So we all know angular momentum is moment of linear momentum. Mathematically, we write expression for angular momentum considering magnitude as well as direction, because angular momentum is a vector quantity, and by theory it is always defined as moment of linear momentum. Means moments mean R into P. So R bar cross P bar. Direction of L is perpendicular to the plane in which this R and P lie. Vector product लेना है. It is given in article 1.8 on page number 16. पेज नंबर 16 का 1.8 आर्टिकल निकालो. उसमें दिया हुआ है एंगुलर मोमेंटम at the given instant is moment of linear momentum at the same instant, because P depends on V. V is changing instant to instant. So we have to define all these related quantities at that particular instant for that particular value of V. So moment of linear momentum at a given instant is called angular momentum at that instant. If you consider only its magnitude, then we can write L is equal to R P sin theta. वेक्टर प्रोडक्ट है ना, तो sin theta लेना पड़ेगा. So where theta is the angle between P bar and R bar. ये उसके डेफिनेशन है. अभी ये डेफिनेशन लेके वी विल प्रूव, कंटिन्यू टू प्रूव कॉन्जर्वेशन, इट्स कॉन्जर्वेशन ऑफ एल. ये हम लोगों को प्रूव करना है. मीन्स लेट अस बिगिन विथ एल. सो वी नो बाय डेफिनेशन एल इज इक्वल टू आर बार क्रॉस पी बार. If you take differentiation on both sides with respect to time, because everything we have to relate with the time, even as time passes, L does not change. So differentiation with respect to time.
So that will be d by dt of vector product of r bar cross p bar. When you use and simplify further, we can rewrite as u into v. So u into dv by dt plus d u by dt into v. ये रूल आप लोगों को मालूम है. बट यू नो चेंज इन मोमेंटम पर टाइम इज फोर्स. सो वी कैन राइट इट एज आर बार डॉट एफ बार. डॉट नहीं, क्रॉस आना चाहिए. u क्रॉस v है तो इसका सिंप्लीफिकेशन u क्रॉस dv बाय dt प्लस डी u बाय dt क्रॉस v. सो r बार क्रॉस f बार प्लस, अभी ये सिंप्लीफाई करो. व्हाट इज p? p इज mv. यूजिंग दैट mv, dr by dt is also v. Change in displacement with respect to time v. p is mv. So if you keep m constant, I can write simplified form as v cross bar v cross. But cross product of vector with itself is always 0. So v bar cross v bar is 0. So this second term vanishes and I could write dl bar by dt as r bar cross f bar. This is the main equation. But you know force and its movement. This is moment of force and moment of force is nothing but torque. जो कपल तैयार होता है उसका हम लोगों ने टॉर्क फाइंड किया, तो बाय डेफिनेशन टॉर्क इज ऑलवेज मोमेंट ऑफ फोर्स. So this term you can consider as torque and I could write dl by dt is equal to टो बार. ये सब वेक्टर्स हैं, ये स्केलर नहीं है. सो टो बार इज इक्वल टू डी एल बार बाय डी टी. दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन. सो इफ नो अनबैलेंस टॉर्क एक्ट्स ऑन द रोटेटिंग बॉडी, ये जो टो है ना तो इनिशियली देना पड़ेगा. एक बार बॉडी ने रोटेशन चालू किया, उसने कांस्टेंट एंगुलर स्पीड एक्वायर की, तो उसके बाद हम लोगों को टॉर्क और एनी एक्सटर्नल मीन्स नहीं प्रोवाइड करनी है. दैट एंड दैट टाइम ओनली टो एक्सटर्नल विल बी 0. शुरू में बॉडी को रोटेट करने के लिए हम लोगों को टॉर्क तो प्रोवाइड करना पड़ेगा ही, बाद में हम लोग वो अनबैलेंस रखेंगे, उसका बैलेंस नहीं चेंज होना चाहिए. सो इफ टो इज इक्वल टू 0 देन इन स्पेशल केस दिस राइट टर्म शुड ऑल्सो बी 0. And you know derivative of any constant is 0. So if dl by dt is 0, L should be constant and it is only possible if tau is equal to 0. So if no unbalanced torque acts on the body, angular momentum of rotating body is always conserved. Means I could write I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2. मैंने कल बोला था बैलेट डांसर एक बार अपनी मोशन चालू की उसने along the vertical axis passing through its body, it goes on rotating. तो उसमें क्या है, if it is straight, वो हैंड नीचे है, ये लेग्स है, and it is spinning, he is spinning around himself. So about this axis of rotation, it has value I1. So it will acquire value omega 1. अभी omega 1 उसकी चेंज नहीं करनी है. अगर वो बिना एक्सटर्नल टॉर्क खुद की वैल्यू चेंज करना पड़ेगा उसको, तो he has to adjust his own value of I2. एक्सिस की पोजीशन चेंज मत करो. If I increase किया, definitely omega should decrease.
सेल्फ एडजस्ट होना चाहिए। तो अगर स्पीड कम करनी है तो वो क्या करता है, खुद के हार्म आउटस्ट्रेच कर देता है। सो मास डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज to the larger distances. So I increases automatically, he controls his own angular speed of rotation. एक बार रोटेशन चालू किया, स्पिनिंग मोशन उसने चालू किया ना, तो वो अपने आप आई की वैल्यू एडजस्ट करके अबाउट द सेम एक्सिस ऑफ रोटेशन ओमेगा कंट्रोल कर सकता है। इनडायरेक्टली इट ही हैज टू एडजस्ट इट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन। उसकी फ्रीक्वेंसी अगर उसको कम करनी है, नंबर ऑफ रोटेशंस इन 1 सेकंड उसको कम करने हैं खुद के, तो उसको आई की वैल्यू खुद की इंक्रीज करनी पड़ती है। ये उसका सिग्निफिकेंस है। सिमिलरली व्हेन वी डाइवर्स है, वो क्या करते हैं, शुरू में डाइविंग बोर्ड पे जाते हैं और स्विमिंग पूल में डाइव करते हैं। सो ड्यूरिंग देयर वे थ्रू एयर बिफोर रीचिंग द वाटर क्या करते हैं, वो बहुत सब अपना बॉडी ना पूरा का पूरा वर्टिकल करते हैं, आर्म्स इन फ्रंट ऑफ देयर हेड एंड दे लीन लाइक दिस, एंड वंस दे गो इनसाइड द वाटर, स्ट्रीम लाइन फ्लो में जाते हैं ना, तो उनको वे स्मूथ पड़ता है। जब भी दे डाइव करते हैं, पानी में अंदर घुस जाते हैं, तभी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इन दिस केस इज लेस। हाथ खुले लग के अगर उसने डाइव की ना, तो क्या होता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है, तो उसको एब्स्ट्रैक्शन ज़्यादा आनी चाहिए। एंड नहीं तो ड्यूरिंग इट्स वे बिफोर इट रीचेस द वाटर, ये जो एयर है उसमें वो बहुत सारे सर्कल्स लेता है, 2-4 सर्कल लेके कूद जाता है। सो टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, इंक्रीज द नंबर ऑफ रोटेशन, रिवॉल्यूशन, स्पिन अबाउट हिमसेल्फ, ही हैज टू कीप हर ऑल ऑर्गन्स बॉडी इंटैक्ट। तो उसमें फ्रिक्शन कम हो जाता है और नंबर ऑफ रोटेशंस डाइव के पहले वो ज़्यादा ले सकता है। So they fold their bodies and they could complete more rounds in air before entering the water. और एक बार हम लोग पानी में जाते हैं ना, तो स्मूथ एंट्री उसकी हो जाती है इफ ही फोल्ड्स द बॉडी। ये 2 एग्जाम्पल्स उन लोगों ने दिए हैं फॉर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। So this is theory part of rotational dynamics. हम लोगों ने अभी तक क्या क्या सीखा? Rigid body rotates. When body rotates, it has to rotate about one specific line of reference, which we refer as axis of rotation. During rotational motion of any body, that axis of rotation passes through that body. It never lies outside the body. Circular motion में outside होता है और rotational motion में वो axis of rotation body से जाना चाहिए। 1 minute, there is one query. Somebody is asking in chat. Madam, your mic is mute. Okay. Thank you for reminding me to make the mic unmute. Already I have explained, I have recording with me, so if possible I will launch it on YouTube. So we have proved this. So up till now during rotational motion, we studied rotational motion of a rigid body. The body might not be rigid and it can also be set in rotational motion. But we dealt with rotational motion of rigid body and we found different relations. When body rotates, it acquires angular velocity, it acquires angular acceleration, and we related kinetic energy of rotating body with angular velocity. We related a torque acting on rotating body with angular acceleration. Third derivation we considered for angular momentum, and
Using analogy between angular, linear and rotational, we proved conservation of angular momentum, which completes the basic theory part related to rotating body. So with this, let us solve few numerics. हम लोगों ने जब रोटेशन चालू किया तभी अर्लियर इन फर्स्ट हाफ ऑफ द चैप्टर वी स्टडीड सर्कुलर मोशन. सर्कुलर मोशन के दो प्रकार हमने लर्न किए, हॉरिजॉन्टल एंड द अदर इज वर्टिकल. Horizontal motion can be uniform, but vertical motion naturally executed by body is never uniform. वर्टिकल मोशन में हम लोगों को अगर वो यूनिफॉर्म रखनी है तो कंट्रोल करना पड़ता है. along with acceleration due to gravity, along the effect of earth's gravity, you have to provide external means so that it will have two accelerations, one due to gravity and other the acceleration due to external force acting on it. That time motion can be uniform even though vertical. When takes only the under of action gravity, then it is always non-uniform. So we have not solved any numeric based on this circular motion. So before proceeding further, for few more theory formulae and their derivations in rotational motion, let us solve few numerics. अभी सर्कुलर मोशन में क्या होता है देखो, अगर मोटरसाइकिलिस्ट is riding over the vertical section of road, means speed breaker. ये रोड है, वर्टिकल सेक्शन है, तो ये क्या हो गया, स्पीड ब्रेकर हो गया. अगर ये सर्कल मैंने पूरा किया तो ये टोटल क्या हो जाएगी, वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो जाएगी. सो ऑलरेडी ही इज इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन. हम लोग जब स्पीड ब्रेकर के ऊपर से जाते हैं ना, तभी हम लोग सर्कुलर मोशन वर्टिकल ही एग्जीक्यूट करते हैं. So when it reaches the top, it should require minimum speed कितनी होनी चाहिए उसकी, v is equal to rg. उससे कम हुई तो वो क्रॉस नहीं कर पाएगा, इधर जाएगा और वापस नीचे गिर के आएगा. इफ ही हैज टू क्रॉस इट विदाउट लूजिंग कॉन्टैक्ट, अगर ज़्यादा स्पीड रहेगी ना इससे तो क्या हो जाएगा, he will lose contact with the road. इतनी स्पीड चाहिए, इससे ज़्यादा भी नहीं और इससे कम भी नहीं. and it can be proved the other way also. When it reaches the top, two forces, weight and normal reaction exerted by road surface. So near towards the center, what is the resultant force so that it will execute circular motion, डाउनवर्ड फोर्स along द रेडियस टूवर्ड्स द सेंटर. अगर रिजल्टेंट फोर्स मिलेगा तो दैट राइडर विल एग्जीक्यूट मोशन ओवर द स्पीड ब्रेकर. सो mg minus normal reaction n will provide necessary centripetal force. When doesn't lose the contact means what, normal reaction force should become 0. So that time g will be v square by r and v is equal to square root of gr. So motorcyclist should possess this much amount of speed when taking drive on speed breaker which is convex in nature. ये कैसा नेचर है उसका, कॉन्वेक्स है. So you can imagine him to be at the uppermost position in vertical circular motion. So this way if you find value of v, or assuming vertical circular motion being at the topmost position, uppermost position, you can solve the same, no matter, doesn't matter. So let us solve. maximum speed कितनी होनी चाहिए, उससे कम किया तो वो वापस गिर जाएगा नीचे.
उससे ज़्यादा है तो लूज कांटेक्ट हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। और इतनी रहेगी, मैक्सिमम इतनी चाहिए, उससे ज़्यादा रहेगी तो वो गिर जाएगा। सो सच क्वेश्चंस आर जनरली आस्क्ड। आई विल रीड वन न्यूमरिक। Vertical section of road over the bridge in the direction of its length is in the form of convex arc of radius 4.4 मीटर। ये जो डिस्टेंस है ना, ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 4.4 मीटर्स। Find maximum speed with which vehicle can cross the bridge without losing contact at the highest point. Center of gravity of vehicle is 0.5 meter from the ground. सेंटर ऑफ ग्रेविटी, हम सब लोग जो फोर्सेस दिखाते हैं वो कहाँ से दिखाते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से दिखाते हैं, एनी पॉइंट से नहीं दिखाते हैं। तो ये रेडियस प्लस डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम द हॉरिजॉन, ये टोटल रेडियस इतनी रहेगी। दिस इज रेडियस ऑफ द रोड, कॉन्वेक्स रोड, एंड यू हैव टू ऐड दिस डिस्टेंस टू फाइंड रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर ट्रैक। ये डिस्टेंस आप लोगों को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ऑल दिस फोर्सेस आर शोन फ्रॉम center of gravity of the system and it never lies on the earth horizon, अर्थ हॉरिजॉन के ऊपर नहीं होता है। तो दिस इज द डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कॉन्वेक्स रोड फ्रॉम सेंटर टू सरफेस ऑफ रोड एंड फ्रॉम सरफेस ऑफ रोड टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी द डिस्टेंस दे हैव गिवन 0.5 मीटर। रेडियस ऑफ कॉन्वेक्स रोड दी है, वो कॉन्वेक्स की दी है, तो ये कितनी दी है, 4.4। और ये जो डिस्टेंस है ऊपर का x, वो कितना दिया है, 0.5 मीटर। सो टोटल रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ विल बी 4.4 प्लस 0.5, दैट इज 4.9 मीटर। ये r की वैल्यू खाली इतनी नहीं लेनी है। अगर दे वुड हैव मेंशन सेंटर ऑफ ग्रेविटी distance above the horizon to the given radius of convex rod, you have to add this distance also. So r is not only r1 but it is r1 plus x. ये ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स है, ये हम लोगों को न्यूमरिक सॉल्व करते समय कंसिडर करने पड़ेंगे। So they have not mentioned G should be 9.8. For simplicity, if you take G 10 meter per second square, then maximum speed will be 4.9 into 10, that is 49, that is 7 meter per second. उन लोगों ने बोला नहीं है कि G की वैल्यू कितनी ले। If I provide you value of G 10 meter per square second, then directly you can say that motorcyclist should have maximum speed 7 meter per second while crossing the speed breaker. ये speed breaker ही हो गया ना, उससे ज़्यादा स्पीड लेके जाता है तो एक्सीडेंट के चांसेस है। मैक्सिमम स्पीड उसको एट द टॉपेस्ट पोजीशन ऑफ कॉन्वेक्स सरफेस मेंटेन कितनी करनी है, 7 मीटर पर सेकंड। सो सच स्मॉल स्मॉल एग्जाम्पल्स आर जनरली आस्क्ड। वन मोर आई विल रीड। मोटरसाइकिलिस्ट राइड्स इन वर्टिकल सर्कल इन हॉलो स्फीयर। एक हॉलो स्फीयर है और वो स्फीयर में ऐसे वर्टिकल सर्कल एग्जीक्यूट कर रहा है, वर्टिकल नॉट हॉरिजॉन्टल। फाइंड रिक्वायर्ड मिनिमम स्पीड एंड मिनिमम एंगुलर स्पीड। स्पीड यानी कि लीनियर स्पीड, और क्या बोला है हम उन लोगों ने, ओमेगा भी फाइंड करना है, सो दैट ही विल नॉट लूज कॉन्टैक्ट एट द हाईएस्ट पॉइंट। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में एट द हाईएस्ट पॉइंट कितनी स्पीड रहनी चाहिए, v इज इक्वल टू आर जी।
स्फीयर की रेडियस उन लोगों ने 5 दी है। तो क्या हो जाता है, v विल बी square root rg is equal to square root 5 into 9.8 is equal to square root 49 is equal to 7 मीटर पर सेकंड। तो अगर ये स्पीड से वो वर्टिकल सर्कल्स एग्जीक्यूट करता है तो वो गिरेगा नहीं बीच में, देर इज नो चांस फॉर एक्सीडेंट। So on this vertical circular motion, generally the numerics are set. Omega can also be found. We know V is equal to R omega is equal to square root of Rg. So omega will be square root Rg upon R square. ये R नीचे गया, उसको अंदर लिया तो R square हो जाएगा. One R will get cancel and it will be G upon R. So this is the formula to find angular velocity. V is equal to square root Rg और ओमेगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी बाय आर, दोनों में फर्क है। सो ये लेके भी हम लोग ओमेगा की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। सो वी सॉल्व टू न्यूमेरिक्स बेस्ड ऑन वर्टिकल सर्कुलर मोशन by completing basic theoretical part of rotational motion. Next time we'll proceed further for deriving few more derivations to learn few more theorems related to rotational motion. I am winding the meet.